Hello friends, welcome to Bankers Platform. So friends, in today's video, we will discuss the circular of Reserve Bank of India regarding opening of current account by banks need for discipline. So friends, as you know that earlier आरबीआई has given the guideline, आरबीआई ने गाइडलाइन दी थी फ्रेंड्स कि कोई भी बैंक जो है किसी अदर एंटिटी का अकाउंट नहीं खोलेगा जिसका किसी और बैंक में कोई लोन हो, ओके, सीसी अकाउंट हो. बट लेटर ऑन द गाइडलाइंस वर चेंज. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन with respect to bank promotion exam, because questions can be asked from here. So let's see what are the important points from this circular. So friends, let's see. On a review and taking into account feedback received from Indian Banks Association and other stakeholders, it has been decided that banks may open current accounts for borrowers who have availed credit facility in form of CC, OD from other banking system. और फ्रेंड्स उसके लिए एज पर द प्रोविजंस बिलो, ये जो हमारे बिलो जो प्रोविजंस जो मेंशन है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए बैंकर्स को अकाउंट ओपन करने हैं. ओके, सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज for the borrowers where the exposure of the banking system is less than 5 crore, there is no restriction on opening of current account or on provision of CC or OD facility by banks, subject to obtaining an undertaking from such borrower that they shall inform the bank as and when the credit facility availed by them from banking system reaches 5 crore or more. तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर किसी भी बोरोर का जो फैसिलिटी है, बोरोर की जो फैसिलिटी है वो लेस देन 5 करोड़ रुपीज है, देन द अकाउंट करंट अकाउंट कैन बी ओपन फॉर द बोरोर्स. बट वी हैव टू टेक अंडरटेकिंग, हमें अंडरटेकिंग लेनी होगी कि जब भी उसकी जो क्रेडिट फैसिलिटी है 5 करोड़ से ज्यादा होती है, देन ही हैज टू इन्फॉर्म द बैंक. Okay, let's see next second point. So friends, second point is in respect of borrower where exposure of the banking system is 5 crore or more, such borrower can maintain current account with any one of the bank with which it has CC or OD facility, provided that bank has at least 10% of exposure. तो फ्रेंड्स अगर किसी भी borrower की जो लिमिट है 5 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, देन ही कैन मेंटेन करंट अकाउंट. वो करंट अकाउंट अभी भी मेंटेन कर सकता है, बट उसी बैंक से मेंटेन कर सकता है जहां पे उसका कम से कम 10% का एक्सपोजर हो, अदरवाइज ही कैन नॉट. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट. फर्दर अदर लैंडिंग बैंक में ओपन ओनली कलेक्शन अकाउंट. जो अदर जिनका 10% से कम का एक्सपोजर है, अदर लैंडिंग बैंक में ओपन ओनली collection account subject to condition that funds deposited in such collection account will be remitted within 2 working days of receiving such fund. तो फ्रेंड्स अगर किसी भी बैंक का 10% से कम एक्सपोजर है और कोई एक्सपोजर नहीं है, दे कैन ऑल्सो ओपन, बट दे कैन ओपन द कलेक्शन अकाउंट. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट उन्हें कलेक्शन अकाउंट ओपन करना है, एंड उसमें ये क्लॉज है कि 2 वर्किंग डेज के अंदर जो भी फंड उसमें आया दैट शुड बी रेमिटेड टू द मेन अकाउंट. ओके, टू द CC or OD account maintained with the above mentioned bank maintaining current account for the borrower. Okay, in case none of the lender has at least 10% exposure of the banking system to the borrower, the bank has the highest exposure may open current account. नॉन लैंडिंग बैंक्स आर नॉट. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स अदर लैंडिंग बैंक्स जो है ना 10%, उनके लिए ये गाइडलाइन है. फॉर 10% जिनका 10% एक्सपोजर है, फॉर दैट दिस इज गाइडलाइन, नॉट फॉर नॉन लैंडिंग. नॉन लैंडिंग्स आर नॉट परमिटेड. यहाँ पे फ्रेंड्स मेंशन है कि नॉन लैंडिंग बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू ओपन करंट अकाउंट, बट जिनका 10% का एक्सपोजर है दे कैन ओपन करंट अकाउंट, बट इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन अकाउंट. और उन्हें 2 वर्किंग डेज में आफ्टर रिसीविंग द फंड उनको रेमिट करना होगा CC या OD अकाउंट में जो डिफरेंट बैंक पे मेंटेन है. ओके, एंड नॉन लैंडिंग बैंक्स जो हैं वो परमिटेड नहीं है करंट अकाउंट ओपन करने के लिए. ओके, लेट्स सी अवर नेक्स्ट पॉइंट. Next is it is clarified that borrowers not availing CC or OD facility from the banking system shall continue to maintain current account as per para 1V of the above circular dated 6 August 2020. Okay, and further banks are permitted to open or maintain the following accounts without any restriction placed in terms of the above mention. So friends, ये account है जो without any restriction open कर सकते हैं. They are interbank account, accounts of all India financial institution
like Exim Bank, NABARD, NHB, and SIDBI, accounts open under specific instruction of central government and state government, accounts attached by orders of central or state government or regulatory body, court, investigating agency, etc., wherein the customer cannot undertake any discretionary debit. Okay, and with the reference to FAQ 18, in line with FAQ 9, banks maintaining collection accounts are permitted to debit fee or charges from such account before transferring the funds to the escrow account or CC or OD. अगर फ्रेंड्स जो भी बैंक है जिन्होंने कलेक्शन अकाउंट ओपन किया, they can debit the charges before transferring the fund. Next point is, with reference to para 3 of the circular dated 14 December 20, it is clarified that banks shall monitor all accounts regularly, at least on a half-yearly basis, specifically with respect to exposure of banking system to the borrower and the bank's share in that exposure. To ensure compliance with these instructions, if there is a change in exposure of banks or aggregate exposure of the banking system to the borrower, which warrants implementation of new banking arrangement, such changes shall be implemented within a period of 3 months from the date of such monitoring. तो फ्रेंड्स अगर लाइक किसी भी बैंकिंग सिस्टम में लाइक उसका एक्सपोजर अगर इंक्रीज हो रहा है, देन ही हैज टू कंप्लाई द रूल्स. तो सो दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच मॉनिटरिंग. सो बैंक हैव टू कंटिन्यूसली मॉनिटर, एटलीस्ट यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, एटलीस्ट ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस. हाफ ईयरली बेसिस पे बैंक्स को मॉनिटर करना है अकाउंट्स को, एंड इफ एनी like implementation or change is required, then that should be completed in 3 months from the date of such monitoring. So the next point is, banks may implement the necessary changes within 1 month from the date of this circular. The compliance position thereon will be reviewed thereafter. So other is, a consolidated self-contained circular on the subject will be issued soon. All other instruction contained in circular will remain same. So friends, this is a circular related to this opening of current account by banks. So you can go through this, you can remember all the main points. Friends, which you have to remember, like the questions can be framed like, for the borrower where exposure of banking system is less than 5 crore, there is no restriction on opening current account. Okay, agar less than 5 crore and no restriction, this is the main point. And when more than 5 crore is there, then they can maintain the account with the bank who is having at least 10% of the exposure. And जिसके साथ है 10% exposure है, they can open collection account. और जो collection account है, in that within 2 working days जो है, after receiving the fund, that has to be remitted to CC or OD account. This is the clause which you have to remember. So non-lending banks are not permitted to open current account. This point also to be remembered. So these are the main points which you have to remember. And this also point you can remember, banks are permitted to open and maintain the following accounts without any restriction: interbank accounts, accounts of this. So these points you can remember. And other is this, banks maintaining collection account are permitted to debit fee or charges from account. Okay, and this monitoring of the, that bank shall monitor all accounts regularly, at least on a half yearly basis. This point is very important, and whatever the changes are there, that should be implemented within a 3 months from the date of such monitoring. And for the banks, these, like all the guidelines, they have to use this guideline within 1 month from the date of this circular. Like they have to do whatever changes, जो भी बैंक को changes करने हैं अपने लेवल पे, वो 1 महीने के अंदर इस सर्कुलर के हिसाब से चीजों को करना होगा for compliance purpose. So friends, thank you, thanks for watching. I hope so you are benefited from this discussion of this circular. Thank you friends, have a nice day.